post-op hemorrhage after extraction. This is a very common complaint that all the dentists come across, that after the extraction patient complains कि जी बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है डॉक्टर साहब और खून तो रुक ही नहीं रहा. तो what happen? These are the few steps which we need to do and we need to guide the patient about these कि भाई जो थोड़ा सा खून निकल रहा होता है वो ज़्यादा नहीं होता, और how you can control this bleeding at home too after extraction. So the first point is that we have to place a small gauze over the socket जहाँ से हमने extraction की है, the fresh socket size. This controls the bleeding. Now this gauze it should be moistened, because अगर हम dry gauze use करेंगे तो blood जब coagulate हो गया उसके साथ after 30 to 45 minutes as per instructions given to the patient, जब वो gauze निकालेगा तो clot जब वो भी साथ ही आ जाएगा और again bleeding will start. Next is large gauze packing avoided. That large gauze pack नहीं हम यूज़ कर सकते क्योंकि ये जो है बाकी दांतों की क्लूजल सरफेस पे आएगा and it will interfere, मतलब पेशेंट के लिए भी uncomfortable होगा और sometimes पेशेंट को इस with the large gauze pack gag भी होता है. Third point is gauze. We all know that we have to instruct the patient कि ये जो हमने ब्रूई या ये जो पट्टी अंदर रखी है इसको आपने 30 से 45 मिनट तक रखना है, which is like for 30 to 45 minutes. And talking should be kept minimum for 2 to 3 hours. Actually patient को भी सारी बातें उस टाइम ही याद आ जाती हैं when we do extraction. So we have to guide the patient कि आपने ज़्यादा बोलना नहीं है. Slight oozing is natural from the fresh socket for the first 24 hours, and we have to guide the patient कि saliva के साथ ये जो हल्का खून slight oozing हो रही है, when it mix with saliva तो it appears to be a large quantity of blood, तो आपको इससे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. So again the sixth point is कि patient should not be worried because just slight oozing है, it is mixed with saliva and it appears to be large. Then comes the if there is more than slight ooze, ठीक है, और पेशेंट कह रहा है कि ज़्यादा ब्लीडिंग है, so we'll instruct the patient to place another gauze in the same way. थोड़ी सी रुई ले ले क्योंकि if the patient is not having gauze at home तो उसको पानी में निचोड़ के moisten थोड़ा सा करके and again place it over the side, and now the patient has to keep it for like 1 hour. या उसके अलावा ये भी कर सकता है कि पेशेंट को हम कह सकें टी बैग जो है वो इस जगह पे रख ले, because टी बैग contains tannin and which is a vasoconstrictor, so this can also be used to control the bleeding for at least, and it can be kept at the extraction site for at least 30 minutes. We have to instruct the patient, especially men who are smokers, that you don't have to smoke because smoking creates the negative pressure, and once the negative pressure is created so it will dislodge the clot और ये जो है ना फिर again bleeding will start. Along with this straw से भी पीने को avoid करना चाहिए कि patient should not suck on a straw because this again creates the pressure, and this should be avoided. Along with this, spitting. So these are the 3 points which create negative pressure: the smoking, the spitting and the use of straw. क्योंकि पेशेंट को लगता है एक्सट्रैक्शन के बाद दैट कि भाई हमने अब कुछ खाना पीना नहीं है तो स्ट्रॉ से लेंगे तो दिस विल बी गुड फॉर अस, जो कि अगैन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने से एज मेंशन्ड अर्लियर क्लॉट को डिसलॉज कर, अगैन दिस विल रिजल्ट इन ब्लीडिंग. Patient should swallow the saliva rather than spitting again and again. No exercise is avoided because this will increase the blood pressure and bleeding will increase. Slight oozing of the blood from this along with the saliva while the patient is sleeping. If the patient is bruised या वैसे ही बाहर निकल रहा है तो patient might get scared कि भाई ये मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, and patient complains कि भाई मेरा डॉक्टर साहब तकिया भर गया. तो patient, we have to guide the patient about each and everything rather than before patient comes back to us or calls us, तो उसको सब कुछ guide करना है. And still if there is prolonged bleeding, first of all and large blood clots, bright red bleeding, so we have to tell the patient that he or she can contact or visit the dentist. And if worried about bleeding, तो patient can call the dentist. जो call करता है तो on call we can tell the patient कि भाई वो ट्रांसमिन कैप्सूल ले ले, ठीक है, which could be it's